Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. We are at the All India Medical Institute in the capital, which of course is the premier medical facility in India. And we're here to talk to the brave young resident doctors who are the frontline warriors against the coronavirus and who've also been at the receiving end of some horrific bigotry and ignorant kind of prejudice. And they're very, very young and they're very, very brave. And we have here Pawan, who's from Haryana, we have Ambika, who's from UP, and we have Chandan, who's from Hyderabad. So आप देख सकते हैं that this is really a microcosm, as it were, of India in some ways. Pawan, आपसे शुरू करूँगी. सबसे ज़्यादा problems जो हैं वो क्या हो रही हैं? अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रांसपोर्ट की आ रही है. जैसे सुबह ड्यूटी रोस्टर सबका अलग होता है, किसी की मॉर्निंग में ड्यूटी होती है, किसी की नाइट में ड्यूटी होती है और किसी की रात की होती है. तो उनको जैसे पेरीफेरी में रह रहे हैं, दिल्ली के फरीदाबाद या गुड़गांव में रह रहे हैं, तो अभी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद है, मेट्रो बंद है और ये DTC बसेस बंद है, तो उनको वहाँ से जिनके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है उनको वहाँ से ड्यूटी पे आने में इशू हो रहा है, को लेट हो जा रहे हैं. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना फुली चलने की और ओनली 25% बसेस आर वर्किंग, उससे बहुत मुश्किल हो रही है. खास करके आई इमेजिन नर्सिंग स्टाफ और जो दूसरा स्टाफ है, everybody, be it lab technician or doctor or nurse, everybody is facing same problem. And Ambika, why don't you add to that? We also read this horrible case which the resident doctors wrote the letter that one person was under pressure to leave the rented premises. Uske bare mein, what can you tell us? So at 2 a.m. at night, since I'm the ladies representative, I got a call at 2 a.m. from a junior that this girl was not being entering into the premises that she had already rented. This is in Delhi? Yes, this was in Delhi, nearby itself, in Gautam Nagar. This is the incident of Gautam Nagar at 2 a.m. at night. And she had come back from Japan. She's a married girl and she came back meeting her husband, and later on what happened, she came back clean from the airport. But she's a doctor here? Yes, she is a resident of here. She's right now not here. So at that very moment when she came here, the landlords asked her to leave because she came from a suspected area. And despite being sent clean off from the airport itself, also when she said that she will get tested here also in our emergency, she was not allowed to stay back. That very moment, since her parents also panicked, and she's married girl also, she had responsibilities. So that very moment she had to leave. That was a really bad time for us because we could not do it that point of time. She left. We couldn't even file an FIR for that. And later on, we had talked to her. Now, when she comes back, definitely we will take some action against that. And also, our Honorable Minister has already given out the order. How did you feel when this happened to one of your comrades, Ambika? How did you feel? Did you feel very hurt? Did you feel very angry? I felt really, really angry at that point of time. We, being the front line, at this point of time, when there's a crisis in the entire world, we are there for everyone. But seeing this situation, this attitude of people towards us was actually not acceptable and also really hurtful. Chandan, why don't you add to that? What are the difficulties? So we've heard about transport, we've heard about prejudice. What about protective equipment? Protective equipment, basically from, we are in AIIMS New Delhi, so we are getting proper protective equipment. But I am from Hyderabad. Many calls from, I'm Vice President of AIIMS here. I am getting many calls from our Hyderabad states and Telangana from Vizag. Almost 50 calls. You're getting, yeah, I am getting for the last 1 to 2 days. Yeah. There is no proper equipment, and the land issues. Basically, this was from Warangal. There are 15 residents. They have to vacate the house. This in Warangal. In Warangal, 15 resident doctors have been asked. So I just want to repeat this. 15 resident doctors in Warangal have been asked to evict their houses. We had one of their AIIMS resident doctors who was asked to get out of her rented accommodation. And Chandan, you're saying that while this is not a problem here at AIIMS, across the country, you all are getting phone calls from your community that there is not enough PPE, which is personal protective equipment. Would you like to add to that, Pawan? ये PPE की जो problem है, ये बहुत एक ही खतरनाक situation है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो treat करेंगे, जो test करेंगे, जो frontline में रहेंगे, और health workers, आप लोग doctors, nurses, वार्ड बॉयज. तो ये PPE जो कमी है, और मैं इसमें ये भी कहना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पे आए तो क्योंकि बहुत से हमारे जो दर्शक हैं वो मुझे हर रोज़ एक कमेंट लिखते हैं वीडियो के नीचे, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है.
तो आज मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हाथ में मास्क लेके आई, लेकिन मैंने नहीं पहना क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन हमें अभी तक जो जानकारी है ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, ये सरफेस टू सरफेस डिजीज़ है। मास्क आपको तभी पहनना चाहिए अगर आपको खांसी हो या आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो। इज़ दिस वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग कि ये होर्डिंग हो रही है कि आम जनता ने सारे मास्क रख लिए हैं? पवन, हाँ, सबसे पहले तो ये जनता को समझना पड़ेगी मास्क की सभी को जरूरत नहीं है। मास्क जो ऐसे सब लोग भाग रहे हैं, मास्क नहीं मिल रहे, हमें मास्क नहीं मिल रहे, मास्क के लिए उन्हीं लोगों को जरूरत है जो या तो किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आती है, सस्पेक्टेड के कांटेक्ट में है, किसी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है, या किसी को थोड़े सिम्टम आ रहे हैं, खांसी आ रही है, फीवर है, क्योंकि आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना है अभी। तो ऐसे पब्लिक के लिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, केवल उन्हीं लोगों को जरूरत है जिनको सिम्टम आ रहे हैं, ये जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं। और इससे इशू क्या होगा कि आगे आगे जैसे अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है, जैसे हम ओवर द कोर्स आगे जाएंगे तो काफी शॉर्टेज होने वाले पीपी की। जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं उनको अगर पीपी ही नहीं मिलेंगे तो सबसे पहले वही लोग पॉजिटिव होने वाले हैं। अगर हमारा हेल्थ केयर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारा स्टाफ ही लोग अगर पॉजिटिव आ जाता है, वो एडमिट हो जाते हैं, तो कौन लड़ेगा? तो ये एक बिग चैलेंज हो जाएगा हमारे देश के लिए। अगर हमारे डॉक्टर्स लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको एडमिट करना पड़ रहा है, हमारी जो फ्रंट लाइन वॉरियर है वही नहीं कोविड पॉजिटिव होने के बाद लड़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे लड़ा जाएगा इस बीमारी से? बहुत आपने अच्छा बोला। अंबिका, would you like to add to that the paucity of the PPE equipment and what young people, what are your ages? I just want to know, how old are you? Yeah, I am 25 years old. 25? You shouldn't ask a lady. No, not at all. I'm telling you my age. I'm 48. Now tell me yours. 28. 28. And you? 29. 29. So these are very, very young doctors. We have to also remember that they have families who are worried for them. They also have their own fears. I'm sure you also feel a little scared sometimes, Ambika? Definitely, we do feel scared, especially when we are being trained, when these sessions are happening, when we are actually being trained in the ICUs, in the screening areas, in the places where, like in Jhajjar, there will be positive patients, definitely in some time. So when we get trained, why do you say that? Why are you saying that about Jhajjar? You mean in any area? Yeah. Jhajjar, because we have a NCI there. That's why. I see. Yeah. Okay. So when the patients will be admitted there, so at that point of time, how are we going to manage that? When we train, we realize it. So it's not that easy to manage it. The suit that, if you would have seen that hazmat suit, it in itself is really scary. For that point of time, the amount of time that you're going to spend in that suit, you're not going to have any food. You cannot go anywhere. You cannot do anything else. You cannot even touch anything else. So that's really scary. Secondly, the other thing is that it has got some emotional component also. Yeah, of course. The other thing, from both parties, the patient party also and the doctor party also. We also have our parents and our siblings, our spouses, everyone, and they also have the How are your families coping? And we have another young doctor. Can I ask you to come this side? Can I ask you to come this side and tell us your name? My name is Dr. Amandeep Singh. Amandeep Singh. So we were just talking about how your families must be scared, about the bigotry, about the prejudice, the shortage of personal protective equipment. What's going through your mind right now? आपके मन में, दिल में क्या है अभी? We, ma'am, the one thing we are having now in our mind is all the doctors is that how to tackle with the corona. Is the most important thing. That we are having lots of issues with the families also. Families are continuously calling us. They are saying कि छोड़ दो, फोन नहीं उठाता तो ये है वो है, but continuously they are also understanding that कि नहीं हमारे लड़के काम कर रहे हैं. I'm from army, my father is from army background, so they are saying ठीक है, you should work first for the patients. So personal protective equipments also are government is providing and everyone is. पर ये अभी बात हो रही थी यहाँ पर कि while AIIMS is well looked after, there are smaller hospitals, there are hospitals in smaller cities जहाँ पे सच्ची में ये एक प्रॉब्लम है. हाँ, ये प्रॉब्लम है. चंदन, आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आ रही है हैदराबाद, वारंगल से. आप बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस? बेसिकली तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट से मुझे ज़्यादा कॉल्स है. बेसिकली आई एम फ्रॉम तेलुगु. सो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जैसा मेन इंस्टीट्यूट टर्शियरी केयर सेंटर्स है, PGI, AIIMS, जिपमर, ये सेंटर्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर मनी गवर्नमेंट जल्दी देगा, कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी करेगा. लेकिन जो नॉर्मल कॉलेजेस में है, इसको कौन देगा? मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? बहुत इश्यूज चल रहा है इसमें. अगर अभी एग्जांपल बताएगा, अभी इंडिया अभी 3rd वीक और 4th वीक ऑफ इलनेस ऑफ कोरोना वायरस डिजीज है. जैसा आप पहले देखा होगा, इटली में क्या होता, फर्स्ट वीक में 3 केसेस था, सेकंड वीक में 150 केसेस था, थर्ड वीक में 450 केसेस था, एंड इमीडिएटली फोर्थ एंड 5th वीक में 6000. अब करंटली मोर देन 60,000 केसेस है. अभी इंडिया अभी 3rd वीक और 4th वीक ऑफ सिचुएशन में है. अब इस टाइम में हमारा
मोस्ट इम्पोर्टेंट हम सबको प्रॉपर एजुकेशन देना है, प्रॉपर जिसको एक्चुअली प्रॉपर मास्क चाहिए, जिसको एक्चुअली प्रॉपर पीपीई चाहिए, जिसको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। तो अभी इटली का हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड वाइड नंबर 2 है, रैंक 2। अगर इटली का हालत अगर इतना हालत हो गए तो हमारा सोचो। I just want to share some data with you. We are understaffed on doctors. We are understaffed on ICU beds. And Chandan makes the very good point that if Italy with the top healthcare system is suffering in this way, we have to be very, very, very careful here. Pawan, आप इसमें ऐड करना चाह रहे थे? इसमें एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप झारखंड का सीन ले लेते हैं हम लोग। अभी झारखंड में कितने कोविड केस है, आपको पता भी कितने? नहीं, मुझे कंफर्म तो नहीं, क्योंकि जीरो केस रिपोर्टिंग है झारखंड से। इसके पीछे में अगर जनता को सोचने क्यों जीरो केसेस है वहाँ पे, क्यों लोग छुपाते हैं अपना हिस्ट्री भी, एक तो ये भी है का नहीं है। अभी एक जो मेरे कोलीग है उनसे मैं बात करता हूँ, झारखंड से है, उन्होंने वहीं से कॉलेज से किया है। उन्होंने बताया मुझे कि वहाँ झारखंड में जो मेडिकल कॉलेज है, जो टर्सरी के जो उनका टॉप कॉलेज है, उसमें भी पीसीआर की टेस्टिंग नहीं हो रही है। So one problem is that there are not enough PCR kits. An Indian company has now been given permission to make kits, but abhi tak मैं जहाँ गई हूँ, ये kits, PPE की shortage is a big problem. But emotional component, I want to ask you, Ambika, you are very young people. You know, you are like soldiers. This is a modern war. You are the soldiers of this war, but you're also very young. You have families, as he was saying, कि phone ही करना बंद नहीं करते. Your emotional feeling right now? Right now, I feel, there are emotions, but there's a cage around it, and that cage comprises of the weapons to kill COVID. To kill COVID. I want all four of you to say what your biggest challenge is right now, one by one. I'll start with you. Ma'am, the biggest challenge at present now is to make everyone understand that who requires what type of personal protective equipment. That is very important. Because if you see one PPE kit, the person hardly can wear it for more than 4 to 5 hours. That is the, so कौन person है जिसको क्या equipment चाहिए, personal protective equipment, that has to be judicially use of that. बहुत ignorance है उसका. पवन, डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? चंदन, वही सेम पवन से एग्री कर रहा है। अगर हम भी इस कोरोना को हम भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? अभी यही क्वेश्चन हम लोग आर्मी वाले जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनसे पूछे कि आपको डर लग रहा है? मैं तो उनसे भी पूछती हूँ, क्योंकि सब एंड में इंसान होते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि मैंने आर्मी बहुत कवर की है, कि ये नहीं होता कि लोगों को डर नहीं लगता. यू कॉन्कर योर फियर. Everyone feels scared, but you have to conquer your fear. Last word to you, Ambika. Please practice social distancing, and डर के आगे जीत है. Nobody can beat you, not even COVID. One thing I want you to say on the prejudice against young doctors. ये बहुत जरूरी है, ये stigma के बारे में बात करना. If anyone of you wants to say anything on that, ये जो stigma आपके colleagues के साथ हो रहा है. So जो हमारे colleagues हैं वो हमारे इतना help कर रहे हैं. Eventually everything is for patient care. Everything is for patient care. हमें उससे कोई personal gain हासिल नहीं हो रहा है. What we are gaining is एक satisfaction, nothing else. So वो satisfaction जब हमें मिलता है, जब एक भी patient मरता है तो उससे equally दुख होता है, और वो हमें नहीं करने देना. We don't want any mortality, क्योंकि वो भी किसी का भाई बंधु है, वो भी किसी का friend है. और so वो हमें नहीं चाहिए. And बहुत hurt होता होगा ना? Definitely. हाँ? It does. Hurt or anger? Hurt. Yes, you wanted to say? एक चीज और मैम, जैसे कि डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर वी आर वर्किंग, मतलब कर रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा जो हमारे को एज अ सपोर्टर के लिए जैसे मेस वर्कर्स हैं हमारे, दे आर अवेलेबल हियर. उनके फैमिली मेंबर्स भी, दे आर क्वाइट वरीड आल्सो. तो वो भी हमारे लिए खाना बनाने के लिए दे आर स्टेइंग हियर. तो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. मतलब एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स में हम उनको भी मान रहे हैं. उनका भी गार्ड्स हमारे हैं, हम तो सब जानते हैं कि बीमारी कैसे फैलती है, क्या है. दे आर स्टैंडिंग ऑन द डोर्स एंड पेशेंट्स आर कमिंग, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑल आर एज अ हेल्थ केयर वर्कर वी आर tackling. It's very important point that the mess workers, the security guards in our neighborhoods, we've seen the safai karamcharis. All of these are part of the war against corona. But I just want to reiterate the few things we've heard. Public transport is an issue. I hope the government will pay attention to this. 25% of buses are running. This is causing great delays in staff getting here. Stigma. If you are stigmatizing against these brave warriors, I personally think you should go to jail. You cannot be so ignorant to stigmatize, to ask young doctors to leave their rented accommodation. It causes hurt. Do not go and buy a mask you do not need. Please do not ask me after this interview, Barkha, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मैंने डॉक्टर से पूछा, बार-बार पूछा, and they told me, हमने भी नहीं पहन रखा. इन्होंने नहीं पहना. When they are not wearing, who are we to? They need to do is hand washing.
Hand washing. Because we have to Social use it distancing. judiciously. Social meter से दूर. distancing is the best thing that you can practice, and you can. And that is actually why contact. you may be wondering, usually when I interview people, I do stand closer. Today we have all stood, we've not stood as closer as the human instinct is. But there is a reason for it. We're trying to avoid physical contact because that is really how this virus travels. I do want to express our gratitude for Chandan, for Ambika, for Pawan and for Amandeep, a microcosm of India, and salutations from all our viewers to all four of you. Thank you so much.